Is the whiteboard visible to you? Please confirm, Tanna. Okay. So environment and biodiversity के सेक्शन के अंदर ज्यादातर आपको ये क्वेश्चंस जीएस पेपर 2 और 3 में एक्सपेक्टेड हैं. डोंट थिंक कि 2 में नहीं आएंगे, सिर्फ 3 में आएंगे, ऐसा नहीं है. तो दोनों जगह इसके क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं. क्वेश्चंस की जो ज्यादातर लेंथ रहती है वो रहेगा पॉलिसी इन द सेंस इंटरनेशनल लेवल. कोई भी एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं या यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है जैसे, तो उसके जो लेटेस्ट समिट्स होते हैं उनके आउटकम्स क्या हैं. ऐसे ही आईपीसीसी की रिपोर्ट है कोई, तो अभी जैसे असेसमेंट रिपोर्ट 6 ये आ रखी है, तो इसके ऊपर बात करनी है. इसी तरह से हमारे पास पॉलिसी लेवल पे जो एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स फ्रॉम योर यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP एंड UNFCC, ये दो इंस्टीट्यूशंस की एनुअल रिपोर्ट, ये पॉलिसी पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है. इसमें इंडियन एस्पेक्ट अपने आप मिल जाता है हमें, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर कवरेज हमें दे देती है. दिस क्वेश्चन तो पक्का तैयार करना ही करना होता है. दूसरा हमने क्वेश्चन तैयार करना होता है क्लाइमेट चेंज का जो बेसिक्स हैं, स्टैटिक पार्ट. वैसे तो ये सारे ही इनके ऊपर क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करेंगे, हर टॉपिक पे बात करेंगे. जब आप इनकी रिपोर्ट्स मेरे साथ कवर करोगे, ऑलमोस्ट हमारा सारा ही इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का एरिया कवर हो जाता है. ठीक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कुछ स्टैटिक पार्ट्स जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मीथेन एक्सेट्रा. अभी मीथेन प्लेज की बात हो रही थी, तो मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैसा है, ऐसा कुछ कंपैरेटिव बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. तो वैसे आपने सब पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो वी डोंट नीड टू ब्रश अप टू मच है. ठीक है. एज फार एज बायोडाइवर्सिटी इज कंसर्न, एक क्वेश्चन यहाँ से भी एक्सपेक्टेड है. तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर एक जैसे साइलेंट एक्सटिंक्शन जिराफ्स के बारे में बोल देते हैं, कुछ भी ऐसी कोई एक वोकैबुलरी उठाएं जो शायद आपने कम सुनी हो लेकिन है करंट अफेयर के अंदर, तो वो करंट अफेयर की कुछ हिडन वोकैबुलरी जो है वो उठाने की कोशिश करनी. सो हियर आवर फोकस हैज टू बी ओनली ऑन करंट अफेयर्स. कभी कभी जैसे वल्चर्स का कुछ कंसर्न उठा लेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर मेडिसिन से उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिक्लोनोफ्लैक के लिए जैसे क्वेश्चन आया था. इस तरह से कुछ भी एक बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. So these are the general areas where we need to focus our attention. When we are doing this, you will come to know कि almost सारे areas हम touch and go करेंगे के साथ साथ ही. So let me just open one of these reports and start working. So this is the first one I would want you to take up. IPCC की जो reports होती है ना, Intergovernmental Panel on Climate Change, ये मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है. ये ईयर ऑन ईयर मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही कि जब भी हम इसमें से क्वेश्चन तैयार करके गए, डेटा तैयार करके गए, वो डायरेक्टली आपके यूपीएससी में मेंस में यूज हो रहा है, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी पूछ लें. मैं नहीं कहता कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन का यहीं से बन जाएगा, ऐसा नहीं होता. वो तो एग्जामिनर का माइंड है, उस कहीं से भी उठा सकते हैं. बट जो डेटा आप यहाँ से पढ़ोगे, मोस्ट यूजफुल आपके लिए ये रिपोर्ट रहती है. ठीक है. अब इसमें से सिलेक्टिवली करना कैसे है, देखो. तो सी इट इज डिवाइडेड इनटू the assessment report, observed and projected impacts and risks, okay, adaptation measures and enabling conditions, and climate resilient development. तो अलग अलग लेवल पे 3 चीजों के ऊपर बात की. अब जो इंट्रोडक्शन है इसी में समरी भी दी गई है, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट. तो लेट्स कम टू दिस. ये अपने आप में बहुत बढ़िया फिगर है, आप मीन्स में सीधा यूज करोगे इसको. देखो, so from climate risk to climate resilient development, climate ecosystem and human society as coupled systems. Okay. So you see, climate change causes impacts and risks. So here it is ecosystem including biodiversity and human society. तो इन्होंने इसको किस तरह से कनेक्टेड है, ये आप स्टैटिक में भी पढ़ते हो. Then future climate change, limiting global warming, societal, energy, industry, urban, rural and infrastructure, किन लेवल पे हमें ट्रांजिशंस करने की जरूरत है. देन इकोसिस्टम ट्रांजिशंस अगर देखें तो लैंड, फ्रेश वाटर, कोस्टल, ओशियन इकोसिस्टम्स एंड देयर बायोडाइवर्सिटी.
तो ये बेसिकली वो एरियाज हैं जिन पे ऊपर काम करें एंड फ्यूचर क्लाइमेट चेंज लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग को लेके क्या एक्शन सब कर पाएंगे. So this is how it is related. Let's see one by one. This is basically the summary. I haven't taken the full report because full report will be very difficult for you to deal with. Yeah. So since the assessment report 5, the knowledge base on observed and projected impacts and risks generated by climate hazards, exposure and vulnerability has increased with impacts attributed to climate change and key risks identified across our reports. Impact and risks are expressed in the terms of their damages, harms, economic and non-economic losses. Risks from the observed vulnerabilities and responses to climate change are highlighted. Now, risks are projected for the near term, that is 2021 to 2040, and mid-term 2041 to 2060, and long-term, that is 2081 to 2100. At different global warming levels for pathways that overshoot 1.5 degrees Celsius global warming level for multiple decades. अलग अलग लेवल पे रिस्क असेसमेंट इन्होंने दिया है. ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट से होता क्या, हम अपनी पॉलिसी इंटरवेंशन उस हिसाब से कर सकते हैं. नाउ कम फॉरवर्ड. जितना जितना मैं करा रहा हूँ उतना करना है, बहुत ज्यादा टेंशन लोगे तो गड़बड़ होगी. ठीक है. So impact of climate change are observed in many ecosystems and human systems worldwide. So if you look at it, we have to focus on Asia more. Okay. So terrestrial changes in the ecosystem in the future. ये जहाँ पे dark blue color आ रहा है, these are high or very high changes. So terrestrial ecosystem in Asia will be highly affected. If you look at the freshwater ecosystem, there is a medium effect. Then if you look at the ocean ecosystem, again, there is a high effect. If you look at the species range shift, so there is, क्योंकि ट्रॉपिकल सिस्टम है ज्यादातर एशिया में, तो स्पीशीज की रेंज पहले ही बहुत जबरदस्त है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज अ लो इफेक्ट. फ्रेश वाटर स्पीशीज के ऊपर थोड़ा इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन ओशियानिक स्पीशीज के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. सो कंपैरेटिवली फ्रेश वाटर स्पीशीज आर एट हायर रिस्क बिकॉज अगर आप देखो जितने भी स्पीशीज वाटर में, उनकी स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल कम होती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बिकॉज पानी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ता या कम नहीं होता. इस चक्कर में उनकी जो स्ट्रेस टॉलरेंस लिमिट है वो भी कम है. शंकर आईएएस वाली बुक में भी आप ये पढ़ते हैं. चेंजेस इन टाइमिंग फिनोलॉजी, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और ओशन सब में ही फर्क पड़ेगा. आपने ना एक चीज इतने पे फोकस करनी है बस. सो ग्लोबली तो सारे ही हाईली इफेक्टेड है, लेकिन एशिया क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, इस वजह से फ्रेश वाटर स्पीशीज आर लिटिल लेस अफेक्टेड, मीडियम इफेक्ट, एंड the range shift in the species will be less observed in Asia. But if you look at the changes, terrestrial, ocean, definitely there is going to be high change. ठीक है. कुछ कंट्रीज हैं जहां पे कम चेंज होगा, जैसे कि एंटार्क्टिक है, उधर वाले रीजन फिर भी बच जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली इम्पैक्ट काफी ज्यादा आएगा उस पर. Now if you look at again impact on water scarcity and food production. Now this is again an important point for you to make. So globally, अब इसका भी प्लस माइनस देख लीजिए, जहां पे लिखा है इंक्रीजिंग एडवर्स एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड इंक्रीजिंग एडवर्स इम्पैक्ट्स. माइनस है तो नेगेटिव ही नेगेटिव है, माइनस प्लस दोनों इकट्ठे लिखा है तो कुछ चीजें पॉजिटिव भी हो जाएंगी. सो ग्लोबली अगर एशिया में देखोगे तो वाटर स्कैर्सिटी को लेके प्लस माइनस है, लेकिन मीडियम रेंज. एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन को लेके बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हाई रेंज में प्लस माइनस है. एनिमल एंड लाइफ स्टॉक हेल्थ प्रोडक्टिविटी को देखोगे तो माइल्ड मीडियम लेवल पे माइनस है. ठीक है. फिशरीज यील्ड एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन मीडियम लेवल पे माइनस है. ठीक है. देन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड वेलबींग
So infectious disease will definitely spread more. Health and malnutrition will happen. Mental health will deteriorate definitely. A lot of people will be displaced. जो डार्क ब्लू है मतलब हाई इम्पैक्ट वाले एरियाज and impacts on city settlement and infrastructure. So inland flooding and associated damages. Mild लिखे गए हैं लेकिन हमने देखा बहुत जबरदस्त होते हैं कहीं कहीं पे. Flood storm induced damages in coastal areas will be very high in Asia. Damages to infrastructure medium. Damages to key economic sectors medium. लेकिन मीडियम इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर इकोनॉमिक कंट्रीज के अंदर अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है. पाकिस्तान में हमने देखा क्या हाल हो रखे हैं अभी तक, वो उबर ही नहीं पाया फ्लड वाली सिचुएशन से. तो ये दो ग्लोबल और एक एशिया, ये दो याद रखने. आप इस रिपोर्ट को कोट करते हुए इसी तरह से इसको याद भी रख लोगे, इसी तरह से इसको वहां पे चाहे लिख के आना तो लिख भी आओगे. वेरी इजी टू इंटीग्रेट इन 250 वर्ड क्वेश्चन. ठीक है. सो कम टू दिस. Climate change has adversely affected the physical health of the people globally and mental health of the people in the assessed regions. Climate change impacts on health are mediated through natural and human systems, including economic and social conditions and disruptions. In all regions, extreme heat events have resulted in human mortality and morbidity. वेरी हाई कॉन्फिडेंस कहने का मतलब है रिपोर्ट कितनी ज्यादा सटीक है, कितनी ज्यादा सही रिपोर्टिंग है उसके ऊपर. हाउ एग्जैक्ट और सक्सेंट इज द डेटा. द occurrence of climate based food borne and water borne diseases has increased. The incidence of vector borne diseases has increased. जैसे कोविड भी ले लीजिए जाए आप. Animal and human diseases including zoonosis, that means जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं, are emerging in new areas. Water and foodborne diseases have increased regionally from climate-sensitive aquatic pathogens, including Vibrio (SPP), and from toxic substances and harmful freshwater cyanobacteria. So health level पे काफी negative effects हैं. आगे आ जाइए. अब उसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आगे और लेकर हमें नहीं चाहिए, इतना बहुत है. Now in the urban setting, what is happening? The observed climate change has caused impact on human health, livelihood, and key infrastructure. Multiple climate, non-climate hazard impacts, cities, settlements, and infrastructure settlement sometimes coincide and magnify the. जैसे हीट डोम्स बनने शुरू हो गए थे यूएस के ऊपर. अभी आजकल अगर आप इटली की न्यूज सुनो तो वहां पे भी बहुत बुरे हालत. Hot extremes, including heat waves, have intensified in the cities, where they have also aggravated air pollution events and limiting functioning of key infrastructure. Observed impacts are concentrated amongst the economically and socially marginalized urban residents. जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर और भी ज्यादा ट्रबल होता है जहाँ पे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं, स्लम्स हैं, राइट. So infrastructure including transportation, water, sanitation, and energy systems that have been compromised by extreme and slow onset events, with resulting economic losses, disruptions of services, and impact to well-being. So all this has troubled. Okay. Then overall adverse economic impacts attributable to climate change, including slow onset and extreme weather events. जैसे मानसून के केस में ले लीजिए आप इंडिया में. ठीक है. Then economic damages from climate change have been detected in climate exposed sectors such as agriculture, forestry, fishery, energy, everywhere, even tourism. Okay. ये लिखना जरूरी होता है. क्लाइमेट एक्सपोज्ड सेक्टर तो एग्जामिनर को लगेगा आपको बड़ी अच्छी समझ है कि क्लाइमेट एक्सपोज्ड सेक्टर्स कौन से हैं. ये प्लीज अपने लिए लाइन नोट कर लीजिए. ठीक है. एंड थ्रू आउटडोर लेबर प्रोडक्टिविटी. नाउ डेफिनेटली ये भी कम होती है जब एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर चलेंगे तो. Some extreme weather events such as tropical cyclones have reduced economic growth in short term. Non-climatic factors, including some patterns of settlement and setting of infrastructure, have contributed to exposure of more assets to extreme climate hazards, increasing the magnitude of losses. Individual livelihoods have been affected through changes in agricultural productivity. So individual के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? Impact assessment. Then through impacts on human health, food security, destruction of homes, infrastructure, loss of property, income, with adverse effect on gender and social equity. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ट्रबलिंग आती है.
So impact at the level of economy, impact at the level of individual, impact at the level of countries or climate in general. तो तीनों लेवल पे कभी impact of climate change लिखना पड़ गया तो ये वाला पॉइंट आपके बहुत काम आएगा. ठीक है. Then climate change is contributing to humanitarian crisis where climate hazards interact with high vulnerability. अभी पाकिस्तान की एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो. 1/3 of the country was flooded and now it is 1 year since that flooding happened. And even today, yesterday I was watching Al Jazeera channel, so they were talking about a documentary there in which the condition of those people were shown, जहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट एड तक नहीं पहुंचा है. तो पहले तो पैसा ही नहीं है सरकार के पास पाकिस्तान की, तो कहाँ से देगा. अभी IMF ने $3 बिलियन का एड दिया, उसके थ्रू कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है वो $8 बिलियन का है अकॉर्डिंग टू दी अल जजीरा रिपोर्टिंग yesterday. सो चाहे $3 बिलियन की एड मिल भी जाएगी तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे. So climate and weather extremes are increasingly driving displacement in all on all regions, with small island states disproportionately affected. मालदीव्स की बात कर लें तो पूरा ही डूब जाएगा with coming times. Flood and drought-related acute food insecurity and malnutrition have increased in Africa and Central and South America. तो ये वाली कंट्रीज की एग्जांपल आराम से दे सकते हो आप. Come forward, इसमें से इतना ही चाहिए. Then non-climatic human-induced factors exacerbate the current ecosystem vulnerability to climate change. So ये basically anthropogenic factors, how far are they responsible for climate change? ऐसा अगर क्वेश्चन लिखना पड़ा तो ये पॉइंट चाहिए. Globally and even within the protected areas, unsustainable use of natural resources, habitat fragmentation, ecosystem damage by pollutants, increase ecosystem vulnerability to climate change. Globally, less than 15% of land, 21% of fresh water, 8% of the ocean are protected areas. In the most protected areas, there is insufficient stewardship to contribute to the reducing damage from or increasing resilience to climate change. तो ये वाला पॉइंट वहां पे मेंशन होगा. एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के ऊपर अगर कभी भी पूछ लिया कि हाउ फार डू दे कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, ये वाला पॉइंट चाहिए. देन कमिंग फॉरवर्ड, regions and people with considerable developmental constraints have high vulnerability to climatic hazard. Global hotspots of high human vulnerability are found particularly in Western, Central and Eastern Africa, South Asia, Central and South America, small island developing states and Arctic. ये लाइन रट्टा मार लो, पेपर में बहुत काम आएगी. वल्नरेबिलिटी तो आप आराम से बता ही सकते हो कहाँ पे ज्यादा है. okay? Between 2010 and 2020, so 10-year trend, human mortality from floods, droughts, storms was 15 times higher in highly vulnerable regions compared to regions with low vulnerability. कहने का मतलब जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज हैं या सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है. ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड, global warming reaching 1.5 degrees Celsius in near term would cause unavoidable increase in multiple climate hazards and present multiple risks to ecosystem and humans. So the level of risk will depend upon the concurrent near-term trend in vulnerability, exposure, level of socioeconomic development and adaptation. Our country में different impact पड़ेगा. Near-term action that limit global warming to close to 1.5 degrees Celsius would substantially reduce the projected losses and damages related to climate change in human systems and ecosystems compared to the higher warming levels, but cannot eliminate them all. So despite our trials, ये खतरा तो सबके ऊपर है ही 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. ओके, कमिंग फॉरवर्ड, ये ऊपर वाला ही यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन्ड है, हमें इसमें से सिर्फ 1-2 पॉइंट्स चाहिए. कम टू दिस वन. सो इन नियर टर्म, climate associated risks to natural and human systems depend more strongly on the changes in their vulnerability and exposure than on difference in climate hazards between emission scenarios. Regional differences exist and risks are highest where species and people exist close to their upper thermal limit, along coastline, in close association with the ice or seasonal rivers. तो वहां पे सबसे ज्यादा डिजास्टर के रिस्क हैं. अभी जैसे
नॉर्थ इंडिया में क्यों ऐसे फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लोज एसोसिएशन विद आइस और सीजनल रिवर्स है ज्यादा। पेरिनियल स्ट्रीम तो है ही है, बारिश के टाइम पे यहाँ पे सीजनल रिवर्स की क्लोज एसोसिएशन की वजह से ये ट्रबल्स आते हैं। ओके, नाउ लेवल ऑफ रिस्क फॉर ऑल concerns, that is reasons for concerns, are assessed to become very high at lower global warming levels than in AR5. Between 1.2 and 4.5 degrees global warming level, very high risk emerge in all 5 RFCs, that is reasons for concern, compared to just 2 RFCs in AR5. RFCs मतलब reasons for concern, क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। Beyond 2040, and depending upon the level of global warming, climate change will lead to numerous risks to natural and human systems. For 127 identified key risks, assessed mid and long-term impacts are up to multiple times higher than currently observed. The magnitude and rate of climate change associated risks depend strongly on the near future or near-term mitigation and adaptation actions. अब रिपोर्ट बेसिकली पता है किस चीज पे स्ट्रेस कर रही है, तुम नियर टर्म में क्या करोगे, ध्यान से सुनो। लेकिन जितनी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स अब हो रहे हैं वो किस पे फोकस है, लॉन्ग टर्म पे। जैसे कि हम बोलते हैं कि नेट न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल कंट्री है ना, तो इंडिया में हमने प्लेज किया कि कार्बन न्यूट्रल हम होंगे जी 2070 के आसपास जाके, चाइना बोलता है 2060 के आसपास जाके। तो वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो एक्शन की जरूरत अब है। तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो क्लाइमेट फंडिंग ये सब चीजें कुछ खास हो ही नहीं रही है ना। सिर्फ हाँ, कुछ कंट्रीज ने टैक्सेशन शुरू कर दिया, जैसे कार्बन टैक्स यूरोप ने लगाना शुरू कर दिया, बट वो एक तरह से प्रोटेक्टिव मेजर ज्यादा है बजाय इसके कि वो एक प्रोग्रेसिव मेजर हो क्लाइमेट चेंज की एडेप्टेशन के लिए। क्योंकि उनको पता है कि हमारे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स तो बहुत अच्छे हैं और हम अगर किसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या है ना कि जहाँ पे कार्बन टैक्स का उनका मतलब क्या है, सपोज इंडिया में स्टील बनता है और उसका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, तो जब वो इंडियन स्टील को यूरोप में इंपोर्ट करेंगे तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी करीब करीब 29% से लेके 50% तक की, बेस्ड अपॉन की उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना। तो ये लॉजिक है। अब इससे तो बेसिकली इंडियन स्टील को वहां बेचना मुश्किल हो जाएगा और यूरोपियन स्टील बिकेगा। अभी इंडियन स्टील उधर क्यों बिक रहा है, क्योंकि हमारी प्राइसिंग ठीक है, सस्ता मिल रहा है, और ये ड्यूटी लगने के बाद वो बराबर हो जाएगी प्राइसिंग, तो फिर लोग सोचेंगे यूरोपियन स्टील ही क्यों ना खरीद लें। इट्स लाइक दिस। वो वहां पे वैसे भी यूरो टू यूरो ट्रांजैक्शन अच्छी है उनके लिए। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। कंट्रीज आर ट्राइंग टू मेक ल्यूक्रेटिव टैक्स, यू नो, स्पेशली यूरोप एट दिस पॉइंट, जिसको कि लीडरशिप रोल लेना चाहिए था इस चीज को हल करने के लिए। ओके, now come to water. So risk in physical water availability and water related hazards will continue to increase by the mid to long term in all assessed regions, with greater risk at the higher global warming levels. At approximately 2 degrees Celsius global warming, snow melt water availability for irrigation is projected to decline in snow melt dependent river basins up to 20%, and global glacier mass loss of 18 to प्लस माइनस 13%, 18 तो होना ही होना है, उसके अंदर प्लस माइनस 13% बोला उन्होंने, is projected to diminish water availability for agriculture, hydropower and human settlements. That is a big deal. सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा होने के चांस है तो in medium to long term, with these changes projected to be double with 4 degree Celsius global warming. So this is again a major trouble for us. Climate change will increasingly put pressure on food production and access, especially in vulnerable regions, undermining food security and nutrition. Increase in frequency, intensity, and severity of droughts, floods, heat waves, and continued sea level rise will increase the risk of food security in vulnerable regions for moderate to high between 1.5 to 2 degrees Celsius of global warming. अगर 2 से ऊपर जाता तो फिर और troubles come forward. Global and regional risk for
increasing levels of global warming. So reasons for concern क्या है? RFC, unique and threatened systems, extreme weather events, distribution of impacts, global aggregate impacts, and large-scale singular events, जैसे कि tsunami types, or big cyclones or something like that are large-scale singular events. So over a period of time, if you look at it, historical average temperature increase between 2011 to 2020 was 1.09 degrees Celsius. So range is 0.95 to 1.2 degrees Celsius. That is from country to country variability. Okay. Now, ये इनका एरिया वाइज डिवाइडेड नहीं है तो थोड़ा सा समझना मुश्किल है. कम टू दिस वन. Absence of risk diagrams does not imply absence of risk within a region. Okay. तो यहाँ पे इन्होंने किन किन चीजों के बारे में बात किया. The risk listed at least medium confidence level क्या क्या है स्मॉल आइलैंड्स के लिए. आपने इसको कैसे यूज करना है. What are the risks associated with 1.5 degrees Celsius climate change level, especially in India? ठीक है. तो इंडिया का तो आपको यहाँ से मिलेगा एशिया के लिए. तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं. सीधे आप 150 वर्ड के आंसर के अंदर सीधे लिख सकते हो मेंस में. तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज एंड इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन वेलबींग एंड हेल्थ ड्यू टू फ्लडिंग स्पेशली इन कोस्टल सिटीज एंड सेटलमेंट्स. देख रहे हो आप पिछले 15-20 दिन से. Biodiversity loss and habitat shift as well as associated disruptions in dependent human systems across freshwater, land and ocean ecosystems. More frequent and extensive coral bleaching subsequent to coral mortality induced by ocean warming and acidification, sea level rise, marine heat waves and resource extraction. Decline in coastal fishery resources due to sea level rise and decrease in precipitation in some parts and increase in temperature. Risk of flood and water security, food and water security due to increased temperature extremes and rainfall variability and drought. सीधे सीधे पॉइंट्स हैं जो आप मीन्स में लिखोगे कि व्हाट आर द रिस्क्स एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज. ठीक है. 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच बीच में ही ये रिस्क एसोसिएटेड. बस बाकी के पढ़ने की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक जैसे ही होने वाला. एक आधा कुछ ज्यादा लिखा हुआ है जैसे अफ्रीका में लिखा है स्पीशीज एक्सटिंक्शन एंड रिडक्शन और इरिवर्सिबल लॉस टू इकोसिस्टम एंड देयर सर्विसेज इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर, लैंड एंड ओशन इकोसिस्टम. तो वो पॉइंट अगर तुम इंडिया में भी लिख दोगे तो कोई नुकसान नहीं है उसमें क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ये सेम ही फिनोमेना हो. ठीक है. तो बस ये है कि 6-7 पॉइंट अपने तैयार कर लो ये वाले, तो सीधा भी कभी भी रिस्क लिखने पड़ जाए तो हम लिख सकते हैं. ठीक है. कमिंग फॉरवर्ड. So global surface temperatures changes in degree Celsius relative to 1850-1900, that is the pre-industrialization period. As these changes are obtained by combining the model simulation with observational constraints based on past simulated warnings. तो अभी हम डेटा को कंबाइन करते हैं इसके हिसाब से. ठीक है. Changes relative to this based on 20-year average periods are calculated by adding 0.85 degrees Celsius to simulated change relative to 1995-2014. ये क्यों करते हैं ऐसे? इसके पीछे एक टेक्निकल कंसर्न है. जो ऑलरेडी इस पीरियड तक हम मान के चलते हैं कि 0.85 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ चुका था. ठीक है. अभी ये 0.85 डिग्री सेल्सियस के चेंज के आगे की बात करते हैं कि हमारा प्रेजेंट सिमुलेशन मॉडल 1995 से 2014 तक ज्यादा डेटा लेके रखता है. ठीक है. तो दैट इज वन. ये ऊपर के जितना भी डेटा है ना उसकी एक तरह से समरी सॉर्ट ऑफ है. So climate change impacts and risks are becoming increasingly complex and more difficult to manage. Multiple climate hazards will occur simultaneously. Is the screen properly visible to you, Tamanna? Please confirm. Yes, sir. Okay. And multiple climatic and non-climatic risks will interact, resulting in compounding overall risk and risk cascading across the sectors and regions. Some responses to climate change results in new impacts and risks. So
ऑल दिस इज देयर। मेरे कहने का बेसिक सा कंसर्न है कि इस डॉक्यूमेंट से सीधे सीधे पॉइंट उठाने हैं जो मेंस में लिखने हैं हमने, ठीक है। ओके, कम टू दिस सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन अप्रोचेस। ये बहुत आजकल न्यूज में रहे कि हम क्या कर सकते हैं इन चीजों को लेके, ठीक है। कितना एफॉरेस्टेशन से क्या फर्क पड़ेगा, सोलर मॉडिफिकेशन से अगर सपोज हम करने की कोशिश करते हैं या आर्टिफिशियल रेन करने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑल दैट, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे। So one is this. Risks are arise from some responses that are intended to reduce the risk of climate change, including risk of maladaptation and adverse side effects of some emissions reduction and carbon dioxide removal measures. इनसे भी risk arise होता है। वो कैसे? Development of afforestation of naturally unforested land or poorly implemented bioenergy with or without carbon capture and storage can compound climate-related risks to biodiversity, water and food security and livelihoods, especially if implemented at large scale. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लद्दाख। लद्दाख में ना नेचुरली ट्री लाइन से ऊपर है वो, तो वहां पे ट्रीज नहीं होने चाहिए। अब क्या हुआ कि एफॉरेस्टेशन के चक्कर में लोगों ने वहां पे पेड़ ला ला के लगा दिए, पानी दे दे के पेड़ खड़े कर लिए। उससे क्या हुआ कि लद्दाख में फ्लैश फ्लड्स की सिचुएशन बननी शुरू हो गई, क्योंकि ओरोग्राफिक बैरियर नहीं था। बहुत हाईलैंड्स के ऊपर खाली मैदान होते थे, और वो ओरोग्राफिक बैरियर ना होने की वजह से एक सिस्टम बना हुआ था कि क्लाउड्स पास कर जाते थे, ठीक है। तो लद्दाख एफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लडिंग शुरू होना एक अपने आप में कंसर्न वहां पे आना शुरू हुआ, और लोगों के घर वहां पे वैसे कच्चे मकान बने हुए हैं, वहां बारिश के हिसाब से वो बना ही नहीं। लेट मी शो यू। अभी जहां जहां पेड़ लगे ना, वहां वहां ये ज्यादा मेजर इशू है, मैसिव। कारगिल के अंदर हर जगह। और पेड़ का क्या है, तुम 4 लगाओगे उसके बाद 400 अपने आप हो जाएंगे धीरे धीरे। जंगल अपने आप बन जाता है। गार्डन को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जंगल को नहीं, ठीक है। तो या दैट्स द फैक्ट, so this happens. So wherever there is naturally no trees, you should not plant trees. If there is desert somewhere, let it be desert, cold desert or hot desert. Okay. Solar radiation modification. So if they were to be implemented, introduce a wide range of new risks to people and ecosystems which are not well understood. Solar radiation modification approaches have potential to offset warming and ameliorate some climate hazards, but substantial residual climate change or overcompensating change would occur at regional scales and seasonal timescales. Large uncertainties and knowledge gaps are associated with the potential of solar radiation modification approaches to reduce climate change risk. कुछ कंट्रीज ऐसी थ्योरीज लेके बैठे हैं कि हम सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन कर लें, वन और द अदर वे, कम इंसुलेशन होगी और उसकी वजह से कम हीटिंग होगा, ऐसी सिचुएशन सोचते हैं वो। लेकिन इसके हमें लॉन्ग टर्म फिनोमेना नहीं पता कि क्या क्या होगा, ठीक है। तो इट में इंक्रीज और रिड्यूस रिजल्टिंग ओशन एसिडिफिकेशन under continued anthropogenic emissions. So we don't know what will happen. So if global warming transiently exceeds 1.5 degrees Celsius in coming decades or later, then many human and natural systems will face additional severe risk compared to remaining below 1.5 degrees Celsius. Depending upon magnitude and duration of the overshoot, some impacts will cause release of additional greenhouse gases, or some will be irreversible even if the global warming is reduced. See, there's something called as tipping points. Tipping points are like this in agriculture, in the overall ecosystem. One, if you consider like 1.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब 1.5 डिग्री सेल्सियस के बाद ना अलग अलग चीजें हिट होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे साइक्लोन्स की मूवमेंट चेंज होगा, ज्यादा सिवियर साइक्लोन्स होंगे। एक बार साइक्लोन्स की मूवमेंट सिवियर होता है तो मानसून में डिसरप्शन होता है, मानसून में डिसरप्शन होता है, विंड चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम्स पे फर्क पड़ता है। सो वन थिंग लीड्स टू द अदर, सो देयर आर टिपिंग पॉइंट्स इन द इन्वायरमेंट। अगर आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करो तो आईपीसीसी ने ही टिपिंग पॉइंट्स की बात की थी। लेट मी शो यू टिपिंग पॉइंट्स।
in the climate system. So in climate science, a tipping point is a critical threshold that, when crossed, leads to a large and often irreversible change in climate change. So if the tipping points are crossed, they are likely to have severe impact on human society, and they will change the behavior of the climate system, ecosystem, ice sheets, everything. Okay. So they are often, but not necessarily, abrupt. For example, the average global warming of somewhere between 0.8 degrees Celsius to 3 degrees Celsius, the Greenland ice sheet passes a tipping point and is doomed. But its melt would take place over millennia. ऐसा नहीं है कि एकदम से melt हो जाएगा. Tipping points are possible at today's global warming of just over 1 degree Celsius, above pre-industrial level, and highly probable at 2 degrees Celsius of global warming. The geological record shows many abrupt changes that suggest tipping points may have been crossed in ancient times. It is possible that some tipping points are close to being crossed or have already been crossed, like those of Western Antarctic and Greenland ice sheets and Amazon rainforest and warm water coral reefs. A danger is that if the tipping point in one system is crossed, this could cause a cascade of tipping points leading to severe, potentially catastrophic impacts. So, इसकी एक example इन्होंने दी. Supposing that melt of Greenland ice sheet happens, then what will happen to the Arctic ozone hole? We don't know. Will it increase or not? And boreal forests die back. Permafrost and tundra, they are lost. Indian monsoon is chaotic already and it creates more chaos. Sahara में greening होनी शुरू हो जाए. West African monsoon shift. Dieback of Amazon rainforest. Already Amazon rainforest has become a carbon sequestration की बजाय carbon add करता है वो. Sink की बजाय source हो गए. Changes in the Antarctic bottom water formation. Instability in Western Antarctic ice sheet. Changes in ENSO amplitude or frequency. So all these are resulting tipping points. जो सिक्स्थ रिपोर्ट है ना, जो आईपीसीसी की अभी हम पढ़ रहे हैं, उसने भी इसके बारे में कुछ बात किया जो डिटेल में. Now it says defines a tipping point as a critical threshold beyond which the system reorganizes, often abruptly and irreversibly. Now कौन कौन से टिपिंग पॉइंट्स इन्होंने मार्क किए हैं वो ऊपर हमारे पास ऑलरेडी आ गए. आपने बस इतना याद रखना है मेंस के लिए. Okay, I'll share this link with you, tipping points. So keep this with you. Next. Come forward. So there are feasible and effective adaptation options which can reduce the risk of people and nature. कई बार suggestions मांगते हैं आपसे, है ना, तो वो आपको कैसे देंगे. So the feasibility of implementing adaptation options in near term differs across sectors and regions. The effectiveness of adaptation to reduce the climate risk is documented for specific contexts, sectors and regions. तो अलग-अलग जगह पे क्या कर सकते हो. तो कुछ examples 2-4 याद रखनी है, ज़्यादा नहीं. So adaptation to water-related risks and impacts make up the majority of all documented adaptation. सबसे जरूरी पानी के साथ related issues. For inland flooding, combination of non-structural measures like early warning systems and structural measures like levees have reduced loss of lives. So enhancing natural water retention, such as by restoring wetlands and rivers. Land use planning, such as no building zone or upstream forest management, can further reduce flood risks. On-farm water management, water storage, soil moisture conservation, irrigation are some of the most common adaptation responses and provide economic, institutional, and ecological benefits and reduce vulnerability. हमारा ना भी ये चल रहा है water use efficiency के ऊपर वर्कआउट पर ड्रॉप मोर क्रॉप. ठीक है, तो वहां पे भी ये यूजफुल रहेगा आपका इंफॉर्मेशन, तो इसको कैरी करना मेन के लिए. So irrigation is effective in reducing drought risk and climate impacts in many regions and have several livelihood benefits.
but needs appropriate management to avoid potential adverse outcomes, which can include accelerated depletion of groundwater, जैसे कि पंजाब में, and other water sources and increased soil salinization. Large-scale irrigation can also alter local or regional temperatures and precipitation patterns, including both alleviating and exacerbating the temperature extremes. The effectiveness of most water-related adaptation options to reduce projected risk declines with increasing warming. So, ये water management के बारे में adaptation कैसे कर सकते हैं वो है. Then, as far as food security is concerned, so effective adaptation options together with supportive public policies enhance food availability and stability, reduce climate risk for food systems while increasing their sustainability. इधर क्या क्या कर सकते हैं? So include cultivar improvement, agroforestry, community-based adaptation, farm and landscape diversification, urban agriculture. तो ये कुछ options हैं जो की जा सकती हैं, suggestions अगर आपसे पूछा जाए food security को लेके, ठीक है? एक document कई जगह काम आएगा ये. So institutional feasibility, adaptation, limits of crops and cost effectiveness also influence the effectiveness of adaptation options. So agroecological principles and practices, ecosystem-based management in fisheries and aquaculture, and other approaches that work with natural processes support food security, nutrition, health and well-being, livelihoods and biodiversity, sustainability and ecosystem services. एक चीज नहीं प्रोटेक्ट करनी, बहुत सारी करनी होती है, और ये वाली वोकैबुलरी यहाँ से इकट्ठी मिल जाएगी एक जगह पे. शंकर आईएएस में ना इस तरह से नहीं, वो एक चीज पढ़ा रहा है तो एक ही चीज पे फोकस करता है, तो इसलिए मीन्स के लिए ये वाली चीज हमें चाहिए, ठीक है? Now come to natural forests, including a conservation, protection and restoration of measures. So in managed forest, adaptation options include sustainable forest management, diversifying and adjusting tree species composition to build resilience, and managing increased risk from pest and disease and wildfires. Restoring natural forests and drained peatlands and improved sustainability of managed forests generally enhances the resilience of carbon stock and sink. Amazon rainforest case में ये useful information रहेगा. Cooperation and inclusive decision making with local communities and indigenous people, as well as recognition of inherent rights of indigenous people, जैसे हमारे यहाँ पे Forest Rights Act है, is integral to successful forest adaptation in many areas. That's that. अब ये टेबल की इतनी जरूरत नहीं है, पीछे जो पढ़ लिया आपने उसी का रेपिटेशन ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? Come forward. Now, जो इकोसिस्टम है उसकी कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, कोस्टल एंड ओशियानिक इकोसिस्टम्स together with targeted management to adapt unavoidable impact on climate change reduces the vulnerability of biodiversity to climate change. Biodiversity conservation के लिए इकट्ठे एक ही वर्ड में बात मिल जाएगी. Resilience of species and biological communities and ecosystem processes increase with size of natural areas by restoration of degraded areas and by reducing non-climatic stress. Come to this. Effective ecosystem-based adaptation reduces a range of climate change risks for the people, biodiversity, and ecosystem services, such as, and this is vulnerable to climate change impacts with effectiveness declining with increasing global warming. Urban greening using trees and other vegetation can provide local cooling, for example. Natural river systems, wetlands, upstream forest ecosystems reduce flood risk by storing water and slowing water flow. In most circumstances, coastal wetlands protect against coastal erosion and flooding associated with storms and sea level rise, where there is sufficient space and adequate habitats are available until the rates of sea level rise increases or adapts naturally. So natural sedimentation build हो जाएगा अपने. Okay. तो इतनी का adaptation strategies बहुत. Disaster management में भी लिखी जाएंगी, इधर भी लिखी जाएगी. Then sea level rise poses a distinctive and severe adaptation challenge. उधर क्या कर लेंगे? उधर क्या कर सकते हैं देखिए. Responses to ongoing sea level rise and land subsidence in low-lying coastal cities and settlements and small islands include protection, accommodation, advance and planned relocation. तो उनको हटाना ही पड़ेगा कुल मिला के वहां.
And these responses will be more effective if combined or sequenced, planned well ahead, aligned with societal or socio-cultural values and developmental priorities, and are underpinned by inclusive community engagement process. लोगों की आम राय बना के उनको वहां से रिहैबिलिटेट ही करना पड़ेगा. Approximately 3.5 billion people globally live in rural areas around the world, and many are highly vulnerable to climate change. चाहे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है इसलिए, चाहे वो कोस्टल एरियाज फिशरीज पे डिपेंडेंट है इसलिए, क्योंकि रूरल folk are more dependent upon nature, very simply. Now, social safety nets are increasingly being reconfigured to build adaptive capacities for most vulnerable in the rural areas and also urban communities. So basically, government के द्वारा कुछ ना कुछ social safety nets की जरूरत पड़ेगी. And there will be co-benefits from things such as education, poverty alleviation, gender inclusion, and food security if we do that. Now, energy system transition. So within energy system transition, the most feasible adaptation option support infrastructure resilience, reliable power systems, and efficient water use for existing and new energy generation systems. क्या कर सकते हैं इसमें? You can diversify energy generation by including renewable energy, yeah, and making it decentralized, such as we should use wind, solar, small scale hydroelectric, everything. तो ये तो हो गया क्रिएशन साइड. लेकिन डिमांड साइड पे देखें, जैसे हम डिमांड साइड में और सप्लाई साइड में क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टोरेज एंड एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स. So supply side and demand side, both side you need improvements, and this can reduce vulnerabilities to climate change, especially in rural population. Adaptation for hydropower and thermoelectric power generation are effective in most regions up to 1.5 to 2 degrees Celsius, with decreasing effectiveness at higher levels of warming. क्योंकि अगर ज्यादा आइस मेल्ट होगा, स्नो मेल्ट होगा 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो फिर रिवर में फ्लो कम हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी उतनी यूजफुल नहीं रहेगी. Climate responsive energy markets, updated design standards on energy assets according to current and projected climate change, smart grid technology, robust transmission systems जिसमें losses कम हो, improved capacity to respond to supply deficit, have high feasibility to be able to mitigate the issue and create some co-benefits also. Cross-cutting options. So strengthening the climate resilience of healthy systems will protect and promote human health and well-being. हमें हर तरह से काम करना पड़ेगा. For example, there has to be a heat health action plans that include early warning and response systems, are effective adaptation options for extreme heat. अभी already यूरोप में इसको implement कर रहे हैं. Then effective adaptation options for waterborne, foodborne diseases include improving access to potable water, reducing exposure of water and sanitation systems to flooding and extreme weather events, improved early warning systems. For vector-borne diseases, effective adaptation options including surveillance, early warning, vaccine development. So all this have to be done. So एक चीज पे काम नहीं कर सकते आजकल आप. आपको हर चीज के लिए मिटिगेशन के लेवल पे तैयार रहना पड़ेगा. Cross-cutting options have to be ready. So effective adaptation options for reducing mental health risks under climate change include improving surveillance, access to mental health care, monitoring psychosocial impacts of the extreme weather events. Health and well-being would be benefited from integrated adaptation approach, such as mainstreaming health into food, livelihood, social protection, infrastructure, water and sanitation policies. आमतौर पे ना ये हेल्थ वाला पॉइंट बहुत कम लोग लिख के आएंगे नहीं, क्योंकि जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट अपॉन योर साइकोलॉजिकल हेल्थ नेवर बॉदर्ड अबाउट. लेकिन आप अगर वहां पे पॉइंट लिख के आओगे तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि तुम्हें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की. ठीक है, तो इसलिए इसको लिखना है जरूर वहां. कई बार हम पढ़ बहुत चीजें लेते हैं, लिखते नहीं है, फिर क्या फायदा. कम फॉरवर्ड. जितने मैं पॉइंट मार्क कराते जा रहा हूँ उतने ही करने हैं, ज्यादा नहीं करने. आई हैव गॉन थ्रू द रिपोर्ट 2-3 टाइम्स. ढंग की चीजें इतनी निकल रही हैं इससे, ठीक है, नहीं तो फिर रेपिटेटिव हो जाती हैं ज्यादा. देन अवॉइडिंग मैल अडेप्टेशन ऊपर हमने लिख लिया ऑलरेडी, 2-3 पॉइंट्स लिख लिया, उतना बहुत है. इनेबलिंग कंडीशंस, कुछ रेपिटेशन है बहुत सारी चीजों में. कम टू दिस क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट.
So what is climate resilient development? पहले तो यही क्वेश्चन है. So it integrates adaptation measures and their enabling conditions with mitigation to advance sustainable development for all. ये सीधी सीधी मेंस में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. तो वहां पे कुछ भी नहीं है, क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की जगह एग्रीकल्चर आ जाए. ठीक है. सो इट इन्वॉल्व्स द क्वेश्चन ऑफ इक्विटी and system transitions in land, ocean, and ecosystems, urban and infrastructure, energy, industry, society, includes adaptation for humans, ecosystems, and planetary health. तो हर चीज के लिए बात करता है. Pursuing climate resilient development focuses on both where people and ecosystems are located, as well as the protection and maintenance of ecosystem functions at the planetary scale. तो सिर्फ regional ही नहीं, planetary level पे भी काम करता है. Pathways for advancing climate resilient development are development trajectories that successfully integrate mitigation and adaptation actions to advance sustainable development. तो आपने बस इतना याद कर लीजिए, बहुत. सिर्फ वेयर रीजनल बेसिस पे नहीं, प्लानिटरी बेसिस पे भी काम. Now, evidence of observed impacts, projected risk levels, and trends in vulnerability and adaptation limits demonstrate that worldwide climate resilient development action is more urgent than previously assessed in Assessment Report 5, जो 2020 में आई. ठीक है. तो क्या कर सकते हैं? Opportunities for climate resilient development are not equitably distributed around the world. क्योंकि इम्पैक्ट डिफरेंट है तो अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट भी डिफरेंट है. तो क्या कर सकते हैं? Embedding effective and equitable adaptation and mitigation in development planning can reduce vulnerability, conserve and restore ecosystem, and enable climate resilient development. Dynamic trade-offs and competing priorities exist between mitigation, adaptation, and development. Integrated and inclusive system-oriented solution based on equity and social and climate justice reduce the risk and enable climate resilient development. ऐसा है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़ा सा नहीं तो ऐसे मुश्किल लगेगा. वेस्टर्न घाट्स है. वेस्टर्न घाट्स में एक रिपोर्ट आई बाय गदगिल कमेटी बैक इन 2007 समवेयर. गदगिल कमेटी रिपोर्ट है. गदगिल कमेटी रिपोर्ट ने कहा कि वेस्टर्न घाट शुड बी preserved as a sanctuary. You should not disturb because it's a biodiversity hotspot, and don't do too much industry, don't do too much mining. It's not good for Western Ghats. तो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लेवल पे बहुत जबरदस्त रिपोर्ट. लेकिन क्या है ना कि देयर इज ऑलवेज अ चैलेंज बिटवीन डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ये इशू है. अब इस चक्कर में अब जितने लोग वहां रह रहे हैं उनकी एस्पिरेशंस एंड डेवलपमेंट के लिए आप उनको डिनाई नहीं कर सकते. इस चक्कर में गवर्नमेंट ने एक और रिपोर्ट निकाली, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट. अब कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने कहा, बेसिकली रिपोर्ट बनवाई गई तभी ऐसा कह दिया गया कि भाई इसमें से अच्छी डेवलपमेंट चाहिए तो प्लीज डू इट अकॉर्डिंगली, है ना. तो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट वाज सेइंग कि आप कर लो डेवलपमेंट, बस थोड़ा बहुत एनवायरमेंट का ध्यान रखो. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अगर ठीक आ रही है तो गो फॉर द डेवलपमेंट. तो वेस्टर्न घाट्स में आज हम ये डेवलपमेंट इस वजह से कर रहे हैं. अब क्यों करना पड़ा ये सब? बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन इक्विटी, सोशल एंड क्लाइमेट जस्टिस. इनको बैलेंस करना अपने आप में एक मेजर चैलेंज है, खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जहां पे कई बार इकोनॉमिक जस्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है. तो ये एक मेजर कंसर्न है. So climate resilient development is enabled when government, civil society, and the private sector make inclusive development choices that prioritize risk reduction, equity, and justice, and when decision-making process, finance, and action are integrated across governance levels, sectors, and time frames. तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा कुल मिला के, और प्लानिंग होलसम होना चाहिए. Climate resilient development is facilitated by international cooperations and by governments at all levels, working with community, civil society, educational bodies, scientific and other institutions, media, investors, businesses, by developing partnerships with traditionally marginalized groups, including women, youth, indigenous people, local communities, and ethnic minorities. तो क्या होता है ना, आमतौर पे हम बोलते हैं कि सबको साथ मिलकर काम करो, लेकिन जब आप इस तरह से
अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स को हाईलाइट करोगे, तो ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। मीन्स के अंदर ना किसी भी कैंडिडेट को मार्क्स देने का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? हाउ डीप इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। वो रिफ्लेक्ट करने के लिए जितना आप ये चीजें स्टेट करोगे, जैसे इतने सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स आप स्टेट करोगे, तो वो आपकी रिफ्लेक्शन करता है उस टाइम पे और नंबर मिलेंगे। पढ़ो अपना मेंस का सिलेबस उठा के, उसमें ये लिखा हुआ है, हाउ डीप इज योर अंडरस्टैंडिंग। इट्स नॉट योर mere ability to answer questions. The depth of understanding is something that is appreciated and given marks for. ठीक है? Okay. So climate resilient development is advanced when actors work in equitable, just and enabling ways to reconcile divergent interests, values, and worldviews towards equitable and just outcomes. बढ़िया लाइन है। तो आंसर के शुरू में कहीं पे भी लिख सकते हो, कंक्लूजन में कहीं पे भी लिख सकते हो, मीन्स के लिए। okay? आगे बढ़ो, पंच लाइन के तौर पे काम कर सकते हो। Then, inclusive governance contributes to more effective and enduring adaptation outcomes and enables climate resilient development. It strengthens the ability of the governments and other stakeholders to jointly consider factors such as rate and magnitude of change and uncertainties, associated impacts, timescales of different climate resilient adaptation pathways, given the past developmental choices leading to past emissions and scenarios for future global warming. तो पुराने के हिसाब से नए का जजमेंट बेटर हो सकता है अगर मिलजुल के काम किया जाए। Governance for climate resilient development is most effective when supported by formal and informal institutions and practices that are well aligned across scale, sector, and policy domains and time frames. सिर्फ एक एनजीटी बना देना सफिशिएंट नहीं है, सबको काम करना पड़ेगा मिलके, फॉर्मल, इनफॉर्मल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं। Now, interactions between changing urban form, exposure, and vulnerability can create climate change induced risk and losses for cities and settlements. However, the global trend for urbanization also offers critical opportunity in the near term to advance climate resilient development. अब ज्यादातर नई नई सिटीज बन रही हैं हर जगह पे, तो अभी से जब वो फॉर्मेशन के फेज में हैं, why don't we right now work upon creating climate resilient infrastructure? तो ये कंसर्न है। So integrated, inclusive planning and investment in everyday decision making about urban infrastructure, including social, ecological, and physical infrastructure, can significantly increase the adaptive capacity of urban and rural settlements. So right now, since the rate of urbanization is high, so that gives us the best opportunity to work upon the same thing. Rapid global urbanization offers opportunities for climate resilient development in diverse contexts, from rural and informal settlements to large metropolitan areas. Urban settlements are critical interconnected sites for enabling climate resilient development, especially at the coastal level. Coastal cities and settlements play a key role in moving towards high climate resilient development, given firstly almost 11% of the global population lived within low elevation coastal zones, and in 2020, this was a situation, potentially increasing beyond 1 billion people by 2050. So low elevation coastal zones are at the highest risk of flooding, as you know, with increasing sea level rise. Then, secondly, these coastal cities and settlements make key contribution to climate resilient development through their vital role in national economies and inland communities, global trade supply chains, and cultural exchange and center for innovation. तो इसलिए कोस्टल सिटीज के ऊपर तो और भी काम करने की जरूरत है। इसके बाद आगे आ रही एंड एक लास्ट में बस ये लाइन चाहिए, cumulative scientific evidence is unequivocal. So climate change is a threat to human well-being and planetary health. Any further delay in concerted anticipatory global action on adaptation and mitigation will miss a brief and rapidly closing window of opportunity to secure livable and sustainable future for all. ये आप अपने किसी भी आंसर की कंक्लूजन में लिख सकते हैं, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइन है।
तो जितना इसमें हाईलाइट कराया, मैं ये डॉक्यूमेंट सेव कर रहा हूँ, हाईलाइटेड आपको दोबारा से सेंड करूंगा आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है, सो दैट यू कैन यूज ओनली द हाईलाइटेड पोर्शन फॉर योर मीन्स। अगर आपने हाईलाइट कर लिया बहुत अच्छा, अगर नहीं भी किया तो आई विल सेंड द हाईलाइटेड डॉक्यूमेंट टू यू वन मोर टाइम। सो दिस इट, आज के लिए इतनी ही डिस्कशन करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चनियर भेजूंगा मेंस का, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के, प्लस इट विल आल्सो हैव दी this year's current affair based question answers on environment and biodiversity. So tomorrow again we'll be having our session at this time only 5 p.m. Okay, so give me some time to just go through that and do some final touches to that questionnaire. तो फिर हम उसके ऊपर कल शाम को 5 बजे दोबारा से संगठित होते हैं। Till then, thank you so much, take care and go through these documents once again.